देश में कोरोना वायरस की रफ्तार एक बार फिर बेकाबू होती जा रही है। संक्रमण दर 7% के करीब पहुंच गई है। दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोरोना के नए मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 5,880 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 12 मरीजों की मौत भी हो गई है। पॉजिटिविटी रेट 6.91% पहुंच गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अगर डेली पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा होता है तो माना जाता है कि संक्रमण बेकाबू हो गया है। राजधानी दिल्ली में भी कोविड ने रफ्तार पकड़ ली है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक रविवार को 699 नए मामले सामने आए हैं और 4 मरीजों की मौत हो गई है। बढ़ते मामलों के बीच मेडिकल एक्सपर्ट सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। मेरा मानना है कि इस टाइम जब मौसम बदल रहा होता है तो रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन के केसेस यूजुअली बढ़ते हैं और कोविड भी और H3N2 जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उनके केसेस कुछ हद तक बढ़ेंगे। दूसरा ये भी हुआ है कि हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल निभाना बंद कर दिया है और कई ऐसे लोग हैं जिनको फ्लू के लक्षण होते हैं, जैसे बुखार हुआ, जुकाम हुआ, नजला हुआ, बॉडी एक्स हुए, लेकिन उन्होंने अपना टेस्ट नहीं कराया, लेकिन वो कम्युनिटी में घूमते रहते हैं बिना कोई प्रिकॉशंस के लिए, तो वो फिर एक तरीके से बीमारी को फैला रहे हैं। तो ये हम देखें कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं हम कर रहे हैं, थोड़ा हद तक वायरस ज्यादा बढ़ता है इस टाइम में, और दूसरा कि हम कोई प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं जिनको जुकाम, नजला, बुखार है, तो इसके कारण केसेस बढ़ेंगे और हम देखते हैं कि हर साल इन्फ्लुएंजा के केसेस बढ़ते हैं। लेकिन इसमें सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन मेरा ये मानना है कि पैनिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ्स जो हैं वो बहुत ड्रामेटिकली इंक्रीज नहीं हुई है, तो इसका मतलब हमारी इम्यूनिटी अच्छी है अगेंस्ट कोविड, अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा। केसेस आर कमिंग बट मेजॉरिटी जो है वो माइल्ड ही है। So it is quite worrying that we are seeing rising cases of COVID. And as we had already predicted, also we knew that this virus is not disappearing, it may appear in different forms, right? So as you remember, there was an Omicron wave then where people got 3-4 day illness and we said 7 days you're free to go back. Similarly, if you see, lots and lots of people have this body ache, sore throat, fever. So this is kind of confusing to everybody, the public and the doctors and the administration, of how aggressive to be with COVID testing, because if it is COVID, then you have to be even more careful about not spreading it, okay? So with the rising trends that we are seeing, these measures which we used as COVID appropriate behavior must be practiced right now, because of the fact that if it is spreading and the numbers are going up like the way they are going up, we should try to contain it right now. And the way to contain it is that the three-way cooperation. One is every individual must be protecting themselves. That is, you wear a mask whenever you're going into like workplace or going into places where there is likely to be a crowd. Avoid densely crowded areas. Always be alert in the sense that if you have somebody who's got a cough and cold, stay away from them. Then also spread the message in your family, in your community, to say, this is something that we need to. So we need to go back to masking, hand hygiene. Isolation if you have a cold and cough. So do not take it casually as it's a common cold, because COVID spreads very fast. So there's no reason why you should give it to other people. So always isolate yourself for those 4-5 days that are necessary. Okay. Then the third thing is that the government can also now issue the instructions and data in a more detailed form, so that people can also appreciate that, yes, this problem is there. So often asked question is, should we lock down? No, there's no reason to. But should we become extremely cautious about this spreading flu and also along with it COVID? Yes, we should. So my advice is threefold. One, try to avoid going to crowded places.
if you have a cough and cold, isolate yourself immediately. And if you have it, that regular, like vitamin C and hydration and all these are very, very helpful. And 2, 3, like I said, isolate yourself, and then also not to communicate outside. So the government can pass this, like what is happening very actively. Thought process is going on right now because the Prime Minister held a meeting yesterday. The Health Minister and the Health Secretary have given a description of where the hotspots are and what's the trends. That's a very important thing that has been done by the government to communicate to the people that COVID has not gone completely. It is coming back. Be careful. And I think that's what everybody should.